Hello guys, welcome back to all. How are you all? Hope you all are fine. And today we are discussing here chapter 3 metals and non-metals exercise question and answers. All the question and answers we will discuss in one video. In my previous video we have discussed here in text questions and answers. All in text and questions and answer we have discussed in my previous video, and I actually got a very good response. Thank you so much to all. And if you are new in our channel, then please subscribe now so that you can get all the latest updates of our channel, because we are discussing here class 10 science, all the chapters, question and answers and text question, also important questions answers we are discussing here. So if you want to get latest updates, then please subscribe now. So let's get started the video. Okay, now the first question is, which of the following pair will give displacement reaction? यहाँ पर हमें A, B, C, D 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से हमने बताना है कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो हमें बता रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, फर्स्ट वन इज A पार्ट NaCl सॉल्यूशन इन कॉपर मेटल, B MgCl2 सॉल्यूशन इन एल्यूमिनियम मेटल, C FeSO4 solution and silver metal, or D AgNO3 solution and copper metal. Here the answer will be D. Why? It's all because AgNO3 solution and copper is correct answer. It's all because of copper displaces the silver cation, okay, reducing them to the elemental metal. In the process, copper itself being oxidized to copper cation, that is Cu2 plus, and going into solution. So silver metal precipitating out and a copper 2 nitrate solution will be remaining. That's why option D AgNO3 solution and copper metal is a correct answer. Okay. Second one question is, which of the following methods is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? First one is applying grease, applying paint, applying a coating of zinc, or all of the above. And firstly we will understand the question what they are asking about. क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? A ग्रीस लगाकर, B पेंट लगाकर, C जिंक की परत चढ़ाकर, और D ऊपर के सभी. Here answer is C, applying a coat of zinc. क्यों? Though applying grease and applying paint prevents iron from rusting, but we cannot apply these methods on frying pan. Hence, applying a coat of zinc is most appropriate method to prevent an iron pan from rusting. Now the third one question is, an element react with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be A calcium, B carbon, C silicon, or D iron. तो पहले तो हम क्वेश्चन समझते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है. कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बहुत ही जल्दी गलने वाला एक यौगिक बनाती है, ठीक है. और ये जो यौगिक है, या हम कंपाउंड बोल सकते हैं यौगिक को, ठीक है. तो ये कंपाउंड जो है वो वाटर में भी सॉल्यूबल है, बहुत जल्दी पानी में घुल जाता है. तो आप ये बताइए कि ये क्या हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, या लोहा हो सकता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कैल्शियम. व्हाई? Because calcium react with oxygen to give calcium oxide, that you know very well, and calcium oxide is soluble in water to give calcium hydroxide. Okay, and carbon form carbon dioxide with oxygen, which is gas. Hence option B is
रॉन्ग। ओके, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, कंपाउंड के बारे में पूछा गया है, बट कार्बन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड विद ऑक्सीजन। ओके, कार्बन जो है वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, दैट इज गैस। ओके, हमें कंपाउंड के बारे में पूछा गया, दैट्स व्हाई कार्बन इज रॉन्ग। सिलिकॉन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दिस इज unsoluble in water. Okay, so option C is not correct. Iron react with oxygen and form iron dioxide, this is insoluble in water, so option D is not correct. That is why calcium is correct answer. Question number 4 is, food cans are coated with tin and not with zinc because A, zinc is costlier than tin, B, zinc has a higher melting point than tin, C, zinc is more reactive than tin, और D, zinc is less reactive than tin. तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि जितने भी फूड कैंस होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि वो डिब्बे जिनमें खाने वाली चीज़ें होती हैं जो हम मार्केट से लाते हैं, उन पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ए ऑप्शन में लिखा है कि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, इसीलिए। बी, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, दैट मीन्स गल जल्दी जाता है, इसीलिए। या सी, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, यानी जल्दी रिएक्ट कर जाता है क्या, इसीलिए। या डी, टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, या कम जो है उसका रिएक्शन पॉइंट कम है, इसीलिए। तो आपका आंसर इसमें क्या रहेगा, आप बताइए। Here the answer is C, because food cans are coated with tin and not with zinc because zinc is more reactive, that is electropositive than tin. Okay. Now the question number 5 is, you are given a hammer, a battery, a bulb, wires and a switch. इसमें हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए पार्ट है, हाउ कुड यू यूज दैम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट वन क्वेश्चन इज दिस, एंड द सेकेंड वन बी पार्ट इज, असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कसिंग अबाउट A part, that is how could you use them to distinguish between samples of metals and non-metals. Okay. इसमें क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि अगर आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार और स्विच जो है वो आपको दे दिया जाता है, ठीक है। ए पार्ट हमसे ये पूछा गया है कि इनको यूज़ करके आप मेटल्स एंड और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके सैम्पल्स के बीच में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो हमसे ये पूछा गया है, तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट ए पार्ट। Answer of A part is, metals are malleable and can be easily drawn into sheets by hitting with hammer. On the other hand, if we beat non-metals, they break down and they cannot be drawn into sheets as they are non-malleable. हमने ये जब इंट्रोडक्शन पार्ट में भी पढ़ा था कि मेटल्स जितने भी होते हैं वो मैलिएबिलिटी पॉइंट इसमें होता है, डक्टाइल भी होते हैं, है ना, हमने पढ़ा था इसको। तो इसको हैमर से बीट करके हम पतले पतले शीट्स में, जिसको हम तार बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं, अगर हम उनको बीट करेंगे तो वो टूट जाएंगे, वो शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे बल्कि वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। That's why. Okay. And metals of good conductors of electricity, that's all we know. आपको पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ऑलमोस्ट मेटल्स जितने भी होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई जितनी भी वायर्स होती हैं कॉपर की, एल्यूमिनियम की, आयरन की होती हैं। ओके, हेंस दे मेक बल्ब व्हेन यू कनेक्ट मेटल्स विद द बैटरी, वायर एंड बल्ब। ओके, सिमिलरली इफ नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ electricity, chance they fail to lit up the bulb on connecting with wire and battery. नॉन मेटल्स जो है वो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और अगर आपके पास बैटरी, स्विच वगैरह कुछ भी है तो उससे आपका जो बल्ब है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा वायर से और बैटरी से, है ना, तो बल्ब ग्लो ही नहीं होगा। दैट्स वाई
This is the answer that I have discussed with you. Okay, I think you understand very well. If you are not understanding the anything that I am discussing with you, then you can comment me on comment section, so that I can get very easy language for you. And if you want Hindi language, then I can get you Hindi language also. Now the B part is assess the usefulness of these tests in distinguishing between metals and non-metals. अब B part में हमसे ये पूछा गया है कि आपने जो फर्स्ट वाले में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सैंपल्स के बारे में पढ़ा, तो इसमें आपको क्या यूज़फुल लगा उसके बारे में बताइए, ठीक है. एंड द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट इज दीज एक्सपेरिमेंट्स कैन बी हेल्पफुल टू डेमोन्स्ट्रेट द मैलेबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके. Sixth one question is, what are amphoteric oxides? Give 2 examples of amphoteric oxides. Okay, and the answer of this question is oxides. Firstly, we will discuss about what are amphoteric oxides. Oxides that react with both acids and bases to form salt and water are known as amphoteric oxides. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होती हैं जो कि एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर इन दोनों को फॉर्म करती हैं, ठीक है. इनको ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोला जाता है. एग्जाम्पल्स इसकी हम अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो वो लेड ऑक्साइड भी हो सकती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हो सकती है, या फिर जैसे कि आप देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड भी हो सकती है, ठीक है. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर द वन विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. एग्जाम्पल lead oxides that can PbO, and aluminium oxide that is Al2O3. that are the chemical equations of amphoteric oxides. Okay, and now moving to the seventh question. Now the seventh question is, name 2 metals which will displace hydrogen from dilute acid and 2 metals which will not. Okay, 2 ऐसे मेटल्स के नेम बताइए जो कि हाइड्रोजन और डाइल्यूट एसिड्स दोनों को डिस्प्लेस कर सकती हैं, ठीक है. दोनों को डिस्प्लेस कर सकती हैं, और 2 ऐसे मेटल्स जो कि ये नहीं कर सकती, ठीक है. तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्टली तो हम जिंक ले सकते हैं, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज वी कैन से मैग्नीशियम, थर्ड वन इज आयरन. ओके, क्योंकि हमसे मेटल्स के बारे में पूछा गया है, तो जिंक एंड मैग्नीशियम एंड वी कैन से आयरन आर द metals which will displace hydrogen from dilute acids, as they are very reactive metals, because they are all are very reactive metals. And gold are not reactive, that we all know. Okay, gold and silver are the metals which will not replace hydrogen from dilute acids, as these metals are less reactive. Okay, now the 8th question is, in the electrolytic refining of a metal M, what would you take as the anode, the cathode and the electrolyte? Here the answer of this question is, in the process of electrolytic refining of metal that called M, an impure and thick block of metal M is considered as anode. Okay, thin strip or wire of pure metal M is taken as cathode. A suitable salt solution of metal M is considered as a electrolyte. 9th question is, Pratyush took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it, as shown in figure below, that you can see on the figure. Here the A part is asking about what will be the action of gas on. Okay, A का first part है dry litmus paper, and second one is moist litmus paper, and the B part is asking about what write a balanced chemical equation for the reaction taking place. Okay, इसमें हमसे पूछा ये गया है कि प्रत्यूष ने सल्फर पाउडर को एक स्पेकुला या हम कच्ची बोल सकते हैं उसमें लिया और उसे ना गर्म किया, ठीक है. तो आप अकॉर्डिंग टू द पिक्चर उसके अनुसार वो बोल रहे हैं कि ट्यूब को उसने उल्टा करके किसी गैस को एकत्रित किया है, ठीक है. तो इसके ए पार्ट में ये है कि गैस की क्रिया क्या होगी.
फर्स्ट वन इज सूखे लिटमस पे क्या उसकी क्रिया होगी, या फिर सूखे हुए पर, या फिर आर्द्र लिटमस पर, ठीक है। और बी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि ऊपर जितनी भी ये रिएक्शंस हुए हैं इनके लिए संतुलित आप केमिकल इक्वेशन भी बताइए, ठीक है। हम अगर सल्फ़र पाउडर को गर्म करते हैं तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड हमें मिलती है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम एसिडिक भी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये पानी के साथ ही रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, ठीक है। तो अब हम आंसर देते हैं ए पार्ट का। नाउ द आंसर ऑफ ए पार्ट इज when sulfur powder is burnt in the air, sulfur dioxide is formed. Okay, now the first part is dry litmus paper. Okay, sulfur dioxide does not have any effect on dry litmus paper, and the moist litmus paper. Second one is sulfur dioxide turn the moist litmus paper from blue to red as the contract of SO2 with water turns to sulfurous acid. Okay, and the B part is write a balanced chemical equation for the reaction taking place that you can see on the screen. Okay, now the 10th question is very easy question. State 2 ways to prevent the rusting of iron. Okay, here we can write first point is iron can be prevented from rusting by coating the surface of iron with rust proof paints. Okay, and the second one we can say by applying oil grease on the surface of iron objects, as it will prevent the iron surface to get in contact with air consisting of moisture. Okay, now moving to the 11th question. Now the 11th question is what type of oxides are formed when non-metals combine with oxygen. Okay, this question actually we already have discussed in introduction part. Okay, in I button that you can watch the introduction part and all the activities of this chapter. And now the answer of 11th question is when non-metals combine with oxygen it forms either acidic or neutral oxides. Okay, and examples that you can watch on the screens. Or now the question number 12 is give reason. A part platinum, gold and silver are used to make jewelry. B part sodium, potassium and lithium are stored under oil. C part aluminium is a highly reactive metal yet it is used to make utensils for cooking. And the D part is carbonate and sulfide ores are usually converted into oxides during the process of extraction. Okay, firstly we will discuss first part, that is platinum, gold and silver are used to make jewelry. Give reason. Okay, we are giving the reason. Platinum, gold and silver are used to make jewelry, for these metals are very less reactive. That's why we are using platinum, gold and silver for making jewelry. Okay, hence they are not affected by air, water or moist chemicals. These metals have a lot of luster. इसमें बहुत ज़्यादा लस्टर का मतलब चमक होती है, ठीक है। एंड दे आर malleable and ductile in nature and also high corrosion resistance in nature. That's why we are using platinum, gold and silver for making jewelry. And the second one, B part, is sodium, potassium and lithium are stored under oil. Okay, we are giving the reason. Sodium, potassium and lithium readily react with water to produce a lot of heat. As a result, hydrogen evolved in the reaction results in a fire. On exposure to water, they react with moisture, okay, present in the atmosphere in order to prevent contact with water. Hence these metals are stored under oil. Third one, C part, aluminium is a highly reactive metal yet it is used to make utensils for cooking. C part, aluminium forms on its surface a non-reactive surface of aluminium oxide. Such coating prevents other compounds from reacting to aluminium. So aluminium is being used to produce utensils for cooking. Okay, and the D part is carbonate and sulfide ores are usually converted into oxide during the process of extraction. The reasons of D part is reducing metal oxide into free metal is easy
Additionally, because it is easier to obtain metals directly from their oxides than from their carbonates or sulfides. The carbonate and sulfide ores are first transformed to oxide to obtain the metals. चलिए अब हम इसको हिंदी में भी डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट, प्लैटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, इसका कारण बताइए। देखिए, प्लैटिनम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसकी लास्टर पॉइंट इसमें यानी कि चमक होती है और ये रिएक्टिव कम होते हैं, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, रिएक्शन पॉइंट इनका कम होता है, इसीलिए हम प्लैटिनम सोना या चांदी का उपयोग जो है वो ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं। सेकेंड वन इज सोडियम, पोटाशियम एंड लिथियम, ये जितने भी हैं इसको हम तेल के अंदर क्यों रखते हैं, ठीक है। सोडियम, पोटाशियम और लिथियम को तेल के अंदर इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ये अत्यधिक रिएक्टिव होते हैं। ये जितने भी मेटल्स हैं अत्यधिक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं और फायर प्रोड्यूस कर देते हैं। इसीलिए किसी भी एक्सीडेंट से बचने के लिए, उसको रोकने के लिए हम इन मेटल्स को तेल के अंदर बचा करके रखते हैं, ठीक है। और सी पार्ट है, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने वाली अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए क्यों किया जाता है, ठीक है, रीज़न बताइए। देखिए, एल्यूमिनियम को हम हवा में खुला छोड़ सकते हैं। हवा में अगर हम इसको खुला छोड़ते हैं तो इसकी जो ऊपर की लेयर है, ठीक है, जिसे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोल सकते हैं, एक पतली परत जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उसके ऊपर होती है, ये जो है रक्षक होती है इसके नीचे के जो स्थिर धातु होती है उसको बचाने में, इससे अधिक क्षति ना हो, उससे ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए एल्यूमिनियम धातु से एल्यूमिनियम मेटल से जितने भी यूटेंसिल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। और फोर्थ वन में हमसे ये पूछा गया है कि कार्बोनेट और जो सल्फाइड है इसके ओर्स को क्यों कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड्स में एक्सट्रैक्शन के दौरान, ठीक है, एक्सट्रैक्शन करने के लिए। क्योंकि ऑक्साइड जो है उसमें कन्वर्ट करना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उससे मेटल्स जो है वो बहुत जल्दी ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द 13 क्वेश्चन। Now the question number 13 is, you must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these salt substances are effective in cleaning the vessels. The answer of this question is, tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind because these salt substances contain acids, okay, which dissolves the coating of copper oxide or basic copper carbonate present on the surface of tarnished copper vessels. This makes them shining red brown again, hence they are very effective in cleaning tarnished copper vessels. देखिए, इसमें हमसे ये पूछा गया है कि जितने भी कॉपर, दैट मीन्स तांबे के जितने भी बर्तन होते हैं उन्हें क्लीन करने के लिए सॉल्ट सब्सटेंस की ज़रूरत क्यों होती है। अब देखिए, कॉपर की ऑक्साइड को क्लीन करने के लिए सॉल्ट सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, सॉल्ट सब्सटेंस यानी कि बेसिस जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे कॉपर की ऑक्साइड को, या सिर्फ कॉपर ही नहीं, हम तांबा, पीतल या कुछ भी ऐसे मेटल्स हैं जिनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आती है, उसको रिमूव करने के लिए सॉल्ट सब्सटेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल माना जाता है। ओके, दैट इज़ द आंसर ऑफ 13 क्वेश्चन। Now question number 14 is, differentiate between metals and non-metal on the basis of their chemical properties. Actually we have discussed so many points, so many discussions we are discussing here, as according to the difference between metals and non-metals. You can write anything with which related to difference between metals and non-metals, as if we say about ductility, luster, malleability, you can write anything that you know, okay. And firstly we will discuss about metal. When metals are heated with oxygen, they form ionic oxides which are basic in nature and form bases on dissolving with water, okay. This turn red litmus paper to blue. And if we will discuss about non-metals, when non-metals are heated with oxygen, they form
covalent oxides which are acidic in nature, which form acid on dissolving with water. This turn blue litmus paper to red. And if we will discuss about metal, they are electropositive, lose electrons readily and become a positive ion. But if we are discussing about non-metal, they are electronegative, gain electrons and become negative ions. Okay. And as we know, metals are lustrous but non-metals are non-lustrous. Graphite is the exception. Okay. And metals reducing agent but non-metals good oxidizing agent. Okay. And metals are the good conductors of electricity and heat, but non-metals are non-conductors of electricity and heat. Graphite is the exception. Okay. And all metals are solids except mercury. Non-metals are in solid, liquid and gaseous states. Okay. That all are the differentiate between metals and non-metals. Question number 15 is man went door to door posing as a goldsmith. He promised to bring back the glitter of gold and dull gold ornaments. An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in a particular solution. The bangles sparkled like new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of the solution he had used? Okay, firstly we will discuss in Hindi language what is in this question asking about. Okay, that is the second last question of this exercise. Okay, इसमें ये पूछा गया कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है, ठीक है, सुनार गोल्डस्मिथ बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया है कि वो लोगों को बोलता है कि आप मुझे अपने सोने के गहने दीजिए, मैं उसे आपको बहुत ही चमकाकर वापस दे दूंगा। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे दे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन या फिर केमिकल है उसमें डाल देता है। कंगन जो है वो नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क यानी कि उनके बीच में आर्ग्यूमेंट होती है। उसके पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस केमिकल की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं कि किस केमिकल में उसने उस सोने की वस्तुओं को डुबोया था? Here the story is very interesting. Can anyone give answer of this question? Yes, now we are discussing the answer of this question is Goldsmith used a solution called aquargia, which is called as royal water in Latin. Okay, it is the mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1. Aquargia is capable of dissolving noble metal like gold and platinum. When upper layer of dull gold ornament is dissolved, they lose their weight. इसका मतलब है कि उस धोखेबाज इंसान ने उस महिला के गहनों को एक्वार्जिया नामक केमिकल में डुबो दिया था, जिससे कि कोई भी मेटल अगर हम ले लें, गोल्ड ले लें, प्लैटिनम ले लें, उसकी अपर लेयर को वो अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। इसीलिए गोल्ड का जो वेट था वो कम हो गया था। ओके, अगर उसकी अपर लेयर हट जाएगी, वो चमक तो जाएंगे लेकिन अपर लेयर का वेट जो है उस केमिकल के अंदर चला जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 16 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 16 number question and the last question of this exercise is give reasons why copper is used to make hot water tanks and not steel an alloy of iron। आप रीज़न बताइए कि क्यों कॉपर का यूज़ किया जाता है हॉट वाटर टैंक्स बनाने के लिए, स्टील को क्यों नहीं यूज़ किया जाता, इसका आप रीज़न बताइए। ओके, नाउ हम इसका आंसर देते हैं। कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद ईदर वाटर और स्टीम, वेयरएज आयरन रिएक्ट विद स्टीम्स टू कोरोड द टैंक। 16 नंबर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि क्यों
हॉट वाटर का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, जबकि लोहे की धातु का हम उपयोग नहीं करते। इसका कारण बताइए। तो इसका कारण यही है कि लोहा जो है वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है और उसमें जंग लग जाता है, ठीक है। कॉपर जो है वो ठंडे पानी, गर्म पानी या भाप के साथ रिएक्ट नहीं करता है, हालांकि जो लोहा है वो गर्म पानी, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। और स्टीम के साथ यदि गर्म पानी के टैंक यानी कि स्टील, जिसको हम लोहे का एक मिश्र धातु से बने हैं, तो लोहा गर्म पानी से बने भाप के साथ क्रिया करेगा और धीरे धीरे उसमें जंग लग जाएगा। हमें पता ही है कि लोहा प्लस भाप यानी कि आयरन प्लस स्टीम दोनों मिलकर जो है वो जंग बना देते हैं, ठीक है। इसीलिए गर्म पानी स्टोर करने के लिए तांबे का उपयोग किया जाता है, स्टील का या लोहे का बिल्कुल भी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।